Assalamu alaikum dear students. I welcome you to the course of Artificial Intelligence and lecture number 11. First of all, we will go through the previous lecture, what we have done until now, so that we can continue from there. We understand what logic is, we understand the meaning and definition of it, where we are using it, then what is propositional logic, because there are different types of logic, and then we understand that one of it is propositional logic. What was the positive and negative points in propositional logic, where are going to be useful for us to use propositional logic and where we cannot use it. Then we understand that if we move to first order logic, which is quite helpful, because it's not only as it is in propositional logic where we say that everything is true or false, but in first order logic we define it as object, that there are objects in the world and they have properties, they have relations with each other, and there are functions that object performs. So it was quite easy then. Then there was a syntax, that what is the syntax of first order logic. We understand the basic elements, what kind of symbols we will use. Then atomic and complete sentences, we understand how to make atomic sentences, what are the components we need, and then the complex sentences, if we gather many atomic sentences, then how will we make a complex out of it. Then we also understand the connections between quantifiers, if there are different kind of quantifiers for all, and then there exist. So if we use these kind of quantifiers, how we will connect it with each other, and what's the combination of it. Now we will move to today's lecture, that what we will study today. We understand what first order logic is. Now we will see how we will use it in different situations, particularly in the game that we understand, that's Worm's World. We will see how we will use this first order logic, which kind of sentences we will use. Knowledge engineering, if we gather all the knowledge, then how we will gather it, which kind of knowledge we will gather, and how we will focus on it, the basic points. So for this reason, if we are gathering knowledge, then we also need to know what knowledge is. So we will understand knowledge definition, different kind of understanding of it, and then if we know knowledge, then how we will transfer it, what are the basic methods to transfer knowledge, then how many types of knowledge there are, and then also we will see how to organize it. If we have different types and then we have knowledge, what are the techniques, what are the basic methods that we can organize knowledge so that we can understand it easily. And one of the organization is frames. There are multiple organization methods, but today inshallah we will try to understand what frames are, and then in next lecture we will understand the other methods of organizing knowledge. So now we will move to the first topic, how we will use first order logic. So if you remember in the early in the few lecture back, we understand if we are going to use a knowledge base agent, then we will need to tell something to a knowledge base or knowledge base agent, and then ask something for retrieval, and then the action will be performed. So in this case, if we are going to tell knowledge base what kind of information can we save there, so that we can use it and understand logic behind it, so that we can apply it somewhere. So what we will say, that tell
The knowledge base example, we can use it as a tell, and if you remember the king example, so then we will use a knowledge base as a keyword. For all x, king x implies person x. So what we are saying to a knowledge base, that if there are x and x is king, then this x will also be a person. So this is one kind of knowledge that we are keeping in our knowledge base. So this will be one query that can we can keep it in our knowledge base, and then we can say tell knowledge base that king John. So if we want to say that John is a king, then this rule will be applied, that John, if John is king, then John is also a person. So that's why we can keep this kind of knowledge, and we can use this kind of knowledge in our knowledge base, and in case of our using first order logic. So these sentences are assertion, like if we want to put it in, we want to keep it, then for using it later on, then we will say tell to the knowledge base. We also want to ask things to the knowledge base. Then if we want to retrieve something, we want to understand if our knowledge base is complete enough, then we can also check it by asking. So if we say ask knowledge base, we are asking from knowledge base, there is one parameter, and the other one is there exists x, person x. So if there exists x, so we want to check if this x is a person or not. So in this case, we can also ask this kind of queries for understanding it. The knowledge base should return the list of x for which a person x is true. So all that kind of x which are persons, then that will be returned, and this person can be John, Richard, etc. So this means that we can have different kind of knowledge base for telling and asking. हम यहाँ पर सिंपल अंडरस्टैंडिंग इस बात की कर रहे हैं कि अगर हमने नॉलेज बेस में कोई इंफॉर्मेशन रखनी है, हम नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे करेंगे कि हम उसमें टेल के थ्रू करेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था स्टार्ट में, जब हम ये देख रहे थे कि नॉलेज बेस एजेंट किस तरह होगा, उसके क्या फीचर्स होंगे। तो हमने उसमें ये अंडरस्टैंड किया था कि हमारे पास टेल की एक ऑप्शन होगी और एक आस्क की होगी, और फिर वो एक्शन परफॉर्म होगा। टेल में वो सिंपली कोई नॉलेज को सेव करेगा, वो उसमें इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए रख सकता है, और फिर आस्क में वो ये देखेगा कि वो क्या परफॉर्म कर सकता है, क्या एक्शन ले सकता है, और जब वो एक्शन जो ऑप्शंस आ जाएंगे फिर वो परफॉर्म हो जाते हैं। तो 3 बेसिक स्टेप्स थे, तो उसमें हम जो टेल था वो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि टेल के थ्रू हम क्या कमांड दे सकते हैं, और फिर आस्क के थ्रू हम उसको कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक versions of Worm's world. So if we want to understand it through Worm's world, then how it will be? A typical percept sentence will be percept, stench, breeze, glitter, none, and none mean like if we don't know if there is a pit, or if we don't know if there is a worm or not. So in that case we only put here none and none, and this 5 actually represents time, because if we are using Worm's world, or if we are in any kind of situation where we are using knowledge base agent, then we will also need time for that, because we will not understand at which time which action should be performed. Because if there are only actions and there is no reference of time, then how we will understand
that at which time or at which situation I should perform which action. Or if we already have done something, then it will also be very difficult to understand if I repeat this action or not. So that's why if we have a timestamp on it, that in time t, if we are doing something, then if we further go on and we want to repeat the same thing and the time is different, then it's okay. But if we don't have the time stamp, then we will for sure repeat the action and we will not have any track of it. यहाँ पर हम सिंपल ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखनी होगी जब भी हम कोई नॉलेज बेस एजेंट बनाएंगे और उसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन रखेंगे और अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास टाइम की स्टैम्प होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइम नहीं होगा तो हम अगर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं और हम उसके बाद दोबारा उस टाइप या उस लोकेशन पे आते हैं जिस एक्शन को हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो शायद कि हम वो एक्शन दोबारा परफॉर्म ना करें, क्योंकि हमने एक मरतबा कर लिया था तो हम दोबारा ना करें उसको। लेकिन अगर हमारे पास टाइम का स्टैम्प होगा साथ कि ये तो टाइम टी में हुआ था और अब टाइम t+1 हो गया है, तो हम इसको दोबारा ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम अपना ट्रैक रखने के लिए या हम ये देखने के लिए कि क्या हमारे पास कोई रिपीटिशन तो बार बार नहीं हो रही, तो उसको चेक करने के लिए हम टाइम स्टैम्प साथ में लगाएंगे। तो अगर हम सिंपल वर्म्स वर्ड में देखें तो हम अगर कोई इन्फॉर्मेशन परसेप्शन अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम उसमें अगर ये कहें कि मेरे पास स्टिंच है, ब्रीज है और ग्लिटर है और बाकी जो दो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है, लेकिन टाइम जो था वो 5 था या 5th स्टेप पे था मैं या 5th रूम में था मैं, तो उस वक्त क्या करना चाहिए। तो ये बेसिकली टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर हम कोई और साथ में रखना चाहें इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक सिचुएशन के लिहाज से तो वो भी हम कर सकते हैं। एक्शन कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं? टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, फॉरवर्ड, शूट, ग्रैब, रिलीज, क्लाइम, फॉर एग्जांपल, इस तरह के जितने भी एक्शंस होंगे वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। टू डिटरमिन बेस्ट एक्शन, कंस्ट्रक्ट क्यूरी। So if we want to have a best action what we want to perform, then for that case we need to have a fixed query which is very easy to be understand by knowledge base agent. So for all A, best action A and timestamp 5. So if we make a function where we can pass A is any kind of query and time 5, or it can be variable with t, then we can say that we can have the best result if we make a function where we can pass any kind of query and want to see if the results are the one we want to achieve. Ask solve this and return A, or it should be grab, because if there is a grab option, if there is grab, then this means that the goal has been picked up, it is grabbed, because we have this option of grabbing, action of grabbing of goal. So that's why the best result for us will be that A is what? Grab. If we have pick up the goal in worm's world, then we will say that we have the good solution. So we can tell what to do, what we want, and also the action, what kind of action should be performed. Now if we want to understand knowledge base of worm's world or for a worm's world, then how it will be, we can make a knowledge base in case of perception for all B, which is breeze, glitter, G, and time. Perception is
breeze B and glitter and timestamp T implies that there is a breeze in time stamp. So if we have glitter and breeze, then what is the important thing in here is that we have this breeze, which is a dangerous sign for us, and we also need to understand that it is in timestamp T. For all stench, breeze and time, perception will be that stench, breeze and glitter. Then in timestamp T we will have glitter T. So it can also implies that we have gold there, but in time T. So simple reflection reflex agent, which just is a type of agent. We will also understand it later on, but simple reflex is that for all T, glitter time T, best action is to grab it in timestamp T. So the best action for if we have glitter is to grab in the specific situation. So now we have that. If we understand that we can have a knowledge base in one world, then we will have different kind of perception which are the knowledge base that we want to build it, and we will keep all on different kind of situation and make queries of it, and then we can retrieve it. So what will be the knowledge engineering in case of first order logic? To identify the task, we need to know what is the overall goal, what we want to achieve. Assemble the relevant knowledge. What kind of knowledge do we need? We will need to collect all of it. What kind of information do we need? We need to collect all of it. Decide on a vocabulary of predicts, function and constants. So we will also need to make sure and to be specific that what kind of functions we will use, and it should be constant, it should not be changed. So if there is any other agent, they will also understand what kind of constants we will use and what kind of predicts we will use. So the vocabulary for it, vocabulary mean what syntax we will use, should be very specific, and we should be fixed on it. Encode general knowledge about the domain. So we will also need to understand generally what the system is doing, and we need to encode it. Encode a description of the specific problem instance, and then if we have specific problems like milestones, then what we will do, we will need also to specify it and encode it exactly according to this specific milestone. Pose queries to the interface producer and get answer. So we will also need to pose different kind of questions so that we can check if the system is working or not, and then we will also see if the answers are correct. Debug the knowledge base, and we will also need to debug the knowledge base and to check step by step if it is fine and if it is working properly. But before going to build a knowledge base in complete, we will also need to understand what knowledge is exactly. हमें knowledge बेस बनाने से पहले हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि नॉलेज है क्या और हम कैसे बना सकते हैं और उसके कौन कौन से तरीके हैं, स्टोरेज के कौन से तरीके हैं, उनमें जो अंडरस्टैंडिंग है, टाइप्स हैं, वो कितने हैं. तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इस पे अभी टाइम लगाएंगे कि नॉलेज क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, ताकि हमें अगर ये समझ आ जाएगी तो फिर हम उसका नॉलेज बेस बड़ी इजीली बना सकेंगे.
Knowledge is the body of facts and principles. So this is one definition which says that knowledge is the body of facts and principles. कुछ हकीकतों और कुछ कानून जो होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स जो होते हैं, उनकी जो कम्बिनेशन है, हम कहते हैं कि ये हमारे पास नॉलेज है. नॉलेज कैन बी लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट्स, प्रोसीजर्स, रूल्स, आइडिया, एब्स्ट्रैक्शन, प्लेसेस, कस्टम एंड सो ऑन. नॉलेज को हम कह सकते हैं कि वो एक लैंग्वेज भी एक नॉलेज है, कॉन्सेप्ट्स जो हैं डिफरेंट किस्म के जो हम बनाते हैं, जो प्रोसीजर्स है किसी चीज़ को कैसे किया जाता है, कौन सा तरीका है, वो भी हमारे पास नॉलेज है. डिफरेंट कानून जो बनते हैं वो भी नॉलेज हो सकते हैं. जो आइडियाज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, हम वो भी कह सकते हैं कि वो भी नॉलेज है. एब्स्ट्रैक्शन है, हम कैसे चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे लेकर आते हैं, वो भी एक नॉलेज है. जो मुख्तलिफ़ लोकेशंस हैं, जो रिवाज हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम नॉलेज कह सकते हैं. इन फिलॉसफी द स्टडी ऑफ नॉलेज इज़ कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी. अब फ़िलासफ़ी में सिर्फ नॉलेज की जो स्टडी है, नॉलेज के ऊपर जो स्टडी की जाती है कि नॉलेज क्या है, कितने टाइप्स हैं और इस तरह की, तो हम उसको एपिस्टेमोलॉजी के नाम से जानते हैं. और इस पे बहुत ग्रीक के टाइम से इस पे काम हो रहा है, बहुत पहले से, और हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम हो चुका है. द फिलोसोफर प्लूटो फेमसली डिफाइन नॉलेज इज़ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ. प्लूटो ने ये कहा था कि नॉलेज एक्चुअली क्या है, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ. आप जिस चीज़ पे बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं, अगर वो जस्टिफाइबल है, आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक नॉलेज है. लेकिन ये ऐसी डिफिनीशन थी कि इस पे बहुत सारे एग्री नहीं भी करते, बहुत सारे फिलोसोफर और बहुत सारे जो फील्ड के माहिर हैं. लेकिन ऐसा भी है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक डिफिनीशन है भी नहीं, अभी तक सारे इस पे कंफर्म नहीं हो चुके. हाउएवर नो सिंगल एग्रीड डिफिनीशन ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट, दो देयर आर न्यूमरस थ्योरीज टू एक्सप्लेन इट. जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे थ्योरीज हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन कोई स्पेसिफिक नहीं है. नॉलेज इज़ a familiarity with someone or something which can include fact, information, description or skill acquired through experience or education. अब यहाँ पर एक और डिफिनीशन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से ली गई है, जिसमें ये बताया गया है कि नॉलेज क्या है. जब आप फेमिलियर होते हैं किसी चीज़ के साथ जिसमें आपके पास फैक्ट्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन हो सकती है, डिस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म के स्किल्स हो सकते हैं, और वो बेस करते हैं या तो एक्सपीरियंस पे या आपके एजुकेशन पे, तालीम जो हासिल करते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग होती है उस पे डिपेंड करते हैं. तो ये नॉलेज की एक ऐसी डिफिनीशन है जिसमें बहुत सारे कंबाइन हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें. It can refer to the theoretical or practical understanding of a subject. So you can also say that knowledge is a theoretical or practical understanding of any specific subject. अगर हम कहते हैं कि जो मैकेनिक है उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है किसी गाड़ी का, तो हम ये कहेंगे कि वो स्पेसिफिक है, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मुतालिक उसके पास इंफॉर्मेशन है, और वो थियोरेटिकल भी हो सकती है और वो प्रैक्टिकल भी हो सकती है. इट कैन बी इम्प्लिसिट एज विद प्रैक्टिकल स्किल्स और एक्सपर्टीज. वो इम्प्लिसिट भी हो सकता है और एक्सप्लिसिट भी हो सकता है. एज विद थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, इट कैन बी मोर और लेस फॉर्मल और सिस्टमैटिक. ये जो है नॉलेज, ये इम्प्लिसिट भी हो सकता है अगर आपके पास कोई स्किल्स हों जो हासिल की गई हों, या ये थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि किसी चीज़ की सिर्फ थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, पता ये हो कि ये काम किस तरह कर रहा है. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके हम प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं कर सकते, हमें थियोरेटिकली कुछ चीज़ों का इल्म होता है.
So if we want to make a pyramid of knowledge and data, information and wisdom, then we can understand it very easily that we always start from bottom and going up. So if we see first we have data, and then we move to information, and then to knowledge, and then wisdom. So if we have wisdom, we cannot take it out directly from data, because it needs to be through these steps, because this is very important that we can take out information from data, and then we can take out knowledge out of information, and if we want to get wisdom, then we will need knowledge for that. So we will go stepwise, so with example, so that you can understand. हम यहाँ पर सिंपल एक पिरामिड देख रहे हैं कि जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जब भी हम नॉलेज को देखेंगे तो वो एक पिरामिड की शक्ल में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि पहला डेटा होगा, फिर इंफॉर्मेशन, नॉलेज और फिर विजडम होगी. हम आपस में इनको कनेक्ट करते हैं टॉप टू बॉटम, और इस तरह नहीं हो सकता है कि हम दरमियान में कोई स्किप करके डायरेक्टली किसी और स्टेप पे चले जाएं. हमें हर एक स्टेप से होकर जाना होगा. अगर हम नॉलेज तक पहुंचना चाहते हैं तो हमारे पास डेटा होना चाहिए, फिर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और फिर हम नॉलेज पे पहुंचेंगे. तो दरमियान में कोई स्टेप स्किप नहीं कर सकते हम. अब डेटा क्या है? डेटा माइट कंसर्न न्यूमेरिकल क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोसेस एलिमेंट दैट कुड इंक्लूड bottle weight, data about the soft drink color, for example. So हम यहाँ पर ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डेटा जो है वो कोई न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं जो कोई ऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं. अगर हम ये कहें कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, उसका वेट कितना है, उसका जो कलर है वो कौन सा है, उसमें कौन सा फ्लेवर है, तो अगर हम ये सारी चीज़ें कलेक्ट करें, कुछ नंबर्स होंगे, कुछ सिंबल्स होंगे, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास डेटा है. तो डेटा हमारे पास कोई भी नंबर्स हो सकते हैं जो हम कलेक्ट करते हैं, और लेकिन वो किसी एक फॉर्म में हम रख लेते हैं. ओनली व्हेन दिस सेट ऑफ डेटा आर पुट इन द राइट ऑर्डर और इन मोर स्पेसिफिक एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क विल दे हैव अ मीनिंग. अब अगर हम इन सारी चीज़ों को बहुत भी ऑर्गेनाइज तरीके से रख ले तो हमें इसकी समझ नहीं आ रही होगी कि ये इसका मतलब क्या है, इसकी क्या मीनिंग है. हमारे पास सिर्फ ये पड़ा हुआ है कि इस बोतल की वेट क्या है, उसका कलर क्या है, तो ये सारे डेट है, लेकिन हम इससे कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते फ़िलहाल अगर हम डेटा की हद तक महदूद रहते हैं. तो डेटा हमारे पास कलेक्शंस हैं नंबर्स की और सिंबल्स की, लेकिन उसकी हम मीनिंग नहीं निकाल सकते. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे. इन दिस एग्जांपल, इंफॉर्मेशन कुड बी एन एक्सेल डेटा शीट दैट डिस्क्राइब सेवरल प्रोडक्शन एलिमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक ड्रिंक लॉट. अब हम करेंगे क्या कि अगर हमारे पास ये डेटा पड़ा हुआ है कि इतने बॉटल्स हैं, उसका कलर ये है, उसमें ये ड्रिंक पड़ा हुआ है, उसमें वाटर की क्वांटिटी क्या है, उसमें फ्लेवर की क्वांटिटी क्या है, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, डेटा है, तो हम इसको अगर एक एक्सेल शीट में ले आए और उसको ऑर्गेनाइज कर लें तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन हो गई. एक स्पेसिफिक लॉट की, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जितने भी लॉट होगी, जितना भी उनकी तादाद टोटल जो स्टोरेज में पड़ा होगा, उसका हम कोई इन फॉर्म ऑफ स्टेटिस्टिक हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि ये एक अब इंफॉर्मेशन है कि मेरे पास फलानी लाट पड़ी हुई है, उसमें क्या कुछ है. हम इसकी एग्जांपल और भी डिटेल से देखते हैं. फॉर एग्जांपल, द टाइटल ऑफ द शीट कुड बी weight of bottles for Coke, lot number 1, 2, and produce on date. So we can say that the lot which we have for any soft drink
if we give it a specific name that it is the lot of Coke, and what's the lot number, what's the date, then if we want to go in more detail what kind of bottle sizes there are, and how much quantity there is, what kind of material of bottle is. So all this, if it is in organized form in an Excel sheet, then we will say that this is one kind of information. It is obvious that this sheet with organized information has a specific purpose. अब हमने ये क्यों किया हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने क्यों रखी हुई है, क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक पर्पस है, इसका एक मकसद है. मकसद क्या है? टू कंट्रोल एंड it is to associate to a particular production of element or object which is Coke and production event. किस टाइम पे हुआ हमारे पास, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए हुआ, कौन सा प्रोडक्ट था, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये सारा काम करते हैं, ताकि ये एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास और इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं किसी मकसद के लिए. मकसद क्या है कि हमें ये पता हो कि कौन से टाइम में हुआ, किस टाइम में ये जो प्रोडक्ट थी ये मार्केट मतलब हमारे पास आ गई है, फिलिंग इसकी हो चुकी है बॉटल्स की, इसमें कौन कौन से फ्लेवर्स अवेलेबल है, इसमें कौन से साइजेस अवेलेबल हैं बॉटल की. तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास हैं तो इसको हम यूज़ करेंगे. अब अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, नॉलेज की तरफ हम कैसे जाएंगे? When the particular knowledge associated with the above data and information is discussed, it could be easily realized that someone who is expert in quality statistical control must interpret the data sheet. अब हमारे पास इंफॉर्मेशन तो आ गई, अब हम उसको क्या करेंगे, उसको नॉलेज में कैसे लेकर जाएंगे? अब हमारे पास कोई एक्सपर्ट होना चाहिए जो इस डेटा शीट को अंडरस्टैंड करे, उसको समझ सके. तो वो क्यों समझेगा इसको? ताकि वो इसको उसके स्टैटिस्टिक्स निकाल सके और वो उसकी कोई क्वांटिटेटिव या क्वालिटी या इस तरह की कोई आउटपुट दे सके कि ये क्वांटिटी के लिहाज से कितना है और इसकी क्वालिटी क्या होगी. इस लिहाज से अगर कोई एक्सपर्ट है तो वो फिर आगे अपनी सजेशंस दे सकेगा. इन एडिशन, दिस पर्सन इन ऑर्डर टू मेक हिज डिसीजन नीड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इवैल्यूएटिंग दिस इंफॉर्मेशन. द फाइनल डिसीजन ऑफ द क्वालिटी मैनेजर कुड बी टू सेंड द बॉटल्स बैक टू रीफिलिंग और टू रैंक द लॉट एज क्वालिटी ए or quality B, and then decide to which markets the lot should be pushed to. अब जो भी एक्सपर्ट होगा उसने इसके ऊपर डिसीजन लेना है और वो डिसीजन इस इंफॉर्मेशन की बेस पे होगी. तो अगर वो इस इंफॉर्मेशन को जो पिछले स्लाइड में हमने देखा उसको यूज़ करते हुए वो कोई डिसीजन लेता है कि या तो ये बॉटल्स वापस भेजनी चाहिए, इसको रीफिल करें क्योंकि इसमें क्वालिटी के इश्यूज हैं, या अगर तो वो ठीक है तो कौन सी क्वालिटी के हैं, क्वालिटी ए है या बी है, कौन सी कैटेगरी में आती है, और फिर ये कि इसको कौन से मार्केट की तरफ भेजा जाए, कौन से मार्केट में ये बेहतर सेल हो सकेगा. अगर तो 3 लीटर वाली बोतल है तो वो कौन से मार्केट में ज़्यादा सेल होगी, और अगर 1 लीटर वाली बोतल है तो कौन से मार्केट में ज़्यादा सेल होगी. तो ये वो इसकी बेस पे करेगा. Only this expert was able to decide how the drinks lot in question varied from the past lot and from the quality standards, and why this lot should be pushed to market A, more strict customers, or to market B, not so strict customers. अब जब वो एक्सपर्ट इस पर डिसीजन लेगा कि ये जो ड्रिंक्स की जो लॉट थी इसकी क्वालिटी क्या थी, कौन से जो पिछला लॉट था उससे इसका डिफरेंस क्या है, और इसको कौन सी मार्केट में बेचना चाहिए, तो वो उसकी क्या रीज़न है,
تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی، یہ ہم کہیں گے کہ یہ نالج کی بیس پہ ہیں، وہ جو ایکسپرٹیز کی بیس پہ ہیں. وہ جب ایکسپرٹ ہوگا نالج کے لحاظ سے تو ہم کہیں گے کہ یہ اس نے ایک ڈیسیجن جب لے رہا ہے تو وہ اپنی نالج کی بیس پہ لے رہا ہے، اور وہ نالج اس نے انفارمیشن سے لی تھی. اب ہم جاتے ہیں وزڈم کی طرف. In this example, the corresponding wisdom could be described as the ability of the quality expert or quality department to improve the whole quality control process by viewing the quality standard again, as well as by reviewing the required control process, taking into consideration previous knowledge and experience. اب وزڈم اس میں کیا ہوگا، اگر ہم اسی کو کنٹینیو کریں ایگزامپل کو، تو وہ یہ ہوگا کہ ٹائم کے ساتھ اس کو اپنی کوالٹی امپروو کرنی چاہیے، اس کو وہ سسٹم امپروو کرنا چاہیے جس طریقے سے وہ پروڈکٹس بن رہے تھے، اس کو ریویو کرنا ہوگا دوبارہ یہ ساری چیزیں، تاکہ وہ اس میں بہتری لا سکے. جو ایکسپرٹ ہے جو کوالٹی کنٹرول کر رہا ہے اس کو ریویو کرنا ہوگا کہ کیا وہ بہتر طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو سارے سسٹم کو دوبارہ چیک کر کے انہانس کرنا کیا ہوگا، یہ ایک وزڈم ہوگی. یہ ہم کہیں گے کہ یہ وزڈم والا کام کیا اس نے نالج کی بیس پہ. In any of the above mentioned cases, the company will improve the quality control process. اب کوئی بھی کوالٹی کنٹرول پروسیس ہوگی تو وہ کیسے امپروو ہوگا، وہ ان سارے کام کرنے کے بعد ہوگا کہ اگر وہ ریویو کرے پورے سسٹم کو، وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ کہاں پر غلطیاں ہو رہی ہیں اور ان کو کیسے ریموو کیا جائے. تو یہ ایک وزڈم ہوگا، ہم کہیں گے کہ اس نے وزڈم کام کیا جو کہ نالج کی بیس پہ تھا. پہلے نالج آ گیا تھا تو پھر اس کے بعد اس نے وزڈم سے کام لے کر اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اور وہ پوری کمپنی اس سچویشن میں اس ایگزامپل میں کر رہی ہے. Now we move to the next topic, which is transfer of knowledge. How we will transfer the knowledge. Symbolic representation can be used to indicate meaning and can be thought of as dynamic process. ہم نالج کو کیسے ٹرانسفر کریں گے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سمبولک طریقے سے اگر ہم جو سمبلز ہوتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کریں نالج کی جگہ پر. اب نالج کو کسی طریقے سے ہم ریپرزینٹ کریں گے، اور وہ اگر ہمارے پاس سمپل سمبلز ہیں تو وہ اگر ہم سمبلز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائیں تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک نالج کی ٹرانسفر ہے. ادر فارم آف کمیونیکیشن انکلوڈ observation and imitation, verbal exchange and audio and video recording. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے اور کمیونیکیشن میتھڈز ہیں، جس طرح آڈیو ویڈیو ہوتی ہے اس کے تھرو ہم کر سکتے ہیں، ہم رائٹنگ کے تھرو کر سکتے ہیں، وہ ابھی ہم دیکھیں گے دوسرے ایگزامپل میں بھی. آبزرویشن کر سکتے ہیں، جب ہم کوئی سچویشن آبزرو کرتے ہیں وہاں سے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور وہاں سے ہم نالج کو ایک ٹائپ سے دوسری ٹائپ میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. ٹرانسفر آف نالج. فلاسفر آف لینگویج کنسٹرکٹ اینڈ اینالائز تھیوری آف نالج ٹرانسفر اور کمیونیکیشن. جو جتنے بھی فلاسفرز ہیں انہوں نے ڈفرینٹ قسم کی تھیوریز بنائی ہے کہ ہم نالج کو کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. While many would agree that one of the most universal and significant tool for the transfer of knowledge is writing and reading, argument over the usefulness of the written words exist. اب جو سب سے بہترین اور پرانا طریقہ ہے وہ رائٹنگ اور ریڈنگ کی صورت میں ہے کہ ہم نالج کو کیسے ٹرانسفر کریں. تو بہتر طریقہ کیا ہے اس کا، اگر ہم اس کو رائٹ کر لیں یا ہم اور لوگ اس کو ریڈ کر لیں تو وہ نالج جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. اور اس پہ سارے ایگری کرتے ہیں فلاسفر جتنے بھی ہیں کہ یہ سب سے پرانا طریقہ ہے اور بہتر طریقہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے نالج کو ٹرانسفر کر لیں. اب نالج کے ٹائپس ہمارے پاس کتنے ہیں؟ بیسک 3 ٹائپس ہیں: پروسیجرل نالج، ڈکلریٹو نالج اینڈ ہیورسٹک نالج. ہمارے پاس 3 بیسک ٹائپس ہوگی.
اب ہر ایک ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کیا ہے. پروسیجرل نالج از compiled or proceed form of information. اب پروسیجرل نالج کیا ہے؟ جو ایک ٹائپ سے دوسری ٹائپ میں موو ہو رہا ہو، ہم ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ میں جا رہے ہوں. پروسیجرل نالج از ریلیٹڈ ٹو دا پرفارمنس آف سم ٹاسک. جب ہم کوئی اسٹیپ پرفارم کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پروسیجرل نالج ہے، پروسیڈ کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ کی طرف جا رہا ہے. فار ایگزامپل سیکوینس آف اسٹیپس ٹو سالو اے پرابلم از پروسیجرل نالج. دس نالج از فارم بائی ڈوئنگ. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پروسیجرل نالج ہے. جب سیکوینس آف اسٹیپس جو پرفارم ہو رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا کیا کام کرنا چاہیے اور اس کے بعد کیا کام کرنا چاہیے تاکہ ہم سولوشن تک پہنچ سکے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک پروسیجرل نالج ہے، پروسیڈ کر رہا ہے، ایک سے دوسرے کی طرف جا رہا ہے اور ایک ایکشن سے دوسرے ایکشن کی طرف جا رہا ہے. In some legal systems, such procedural knowledge has been considered the intellectual property of a company and can be transferred when that company is purchased. اب کوئی کام کس طرح ہو رہا ہے، پروسیس اس کا کس طرح ہو رہا ہے، تو وہ جو ہے ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. وہ آپ کسی کو دیکھ کر ویسا ہی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک پراپرٹی ہے. وہ آپ تب کر سکتے ہیں جب خرید لیں آپ. تو کسی چیز کو بنانے کا جو پروسیجرل ہے، جو سٹیپس ہیں، وہ کاپی رائٹڈ ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ اس کو دیکھ کر وہ چیز نہیں بنا سکتے. یہ ایک یونیورسل لا ہے. اس وجہ سے جو پروسیجر ہوگا، جو سٹیپس ہوں گے کسی بھی پروڈکٹ کو بنانے کے یا کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے، وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. تو اس وجہ سے یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ کون سی چیز آپ خود سے کر سکتے ہیں اور کون سی آپ کسی اور سے کاپی کر سکتے ہیں. One advantage of procedural knowledge is that it can involve more senses, such as hand-on experience, practice at solving problem, understanding of the limitations of a specific solution. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ایڈوانٹیجز بھی اس کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم پریکٹیکل ایکسپیرینس لیتے ہیں اس کا. ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سا پرابلم کو کیسے سالو کیا جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ ہمیں پروسیجرل نالج سے ملتے ہیں اور اس کے یوزفلنس کی وجہ سے ہے. ڈکلیریٹو نالج کیا ہے؟ ڈکلیریٹو نالج از پیسو نالج ان دا فارم آف statement of facts about the world. The type of knowledge that is by its very nature expressed in declarative sentences or indicative propositions. اب جس چیز کو ہم ڈکلیئر کر سکیں، جس کو ہم الفاظ میں لا سکیں، جس کو ہم لکھ سکیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک ڈکلیریٹو نالج ہے. ڈکلیئر کر سکتے ہیں ہم، فیکٹس کی بیس پہ ہے. جو بھی اسٹیٹس میں ہم لکھتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک ڈکلیریٹو فارم ہے. فار ایگزامپل مارک اسٹیٹمنٹ آف اسٹوڈنٹ از ڈکلیریٹو نالج. جتنے بھی ہم مارک اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نے کتنے مارکس لیے، تو یہ ہمارے پاس ایک ڈکلیریٹو نالج ہو گیا. ہم وہاں سے نالج انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، لیکن ڈکلیریٹو فارم میں ہے، ڈکلیئر ہو چکا ہے سینٹینسز میں. ہیورسٹک نالج کیا ہے؟ Heuristic knowledge are rule of thumb or tracks. Heuristic knowledge is used to make judgments and also to simplify solution of problem. It is acquired through experience. An expert use his knowledge that he has gathered due to his experience and learning. اب آپ کو اگر یاد ہے، ہم نے اے آئی کی ڈیفینیشن میں اور ان میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہیورسٹک نالج ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ رول آف تھم ہے.
एक तरीका है जो हमें एक सोल्यूशन की तरफ लेकर जाता है, वो नॉलेज की बेस पे है, वो जजमेंट की बेस पे है, वो कितना वो डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसके पास है, वो किसी एक डोमेन का कितना एक्सपर्ट है उसकी बेस पे है, वो ह्यूरिस्टिक कर सकता है, वो कोई सोल्यूशन निकाल सकता है अगर उसके पास पहले से कोई उसका सोल्यूशन अवेलेबल ना भी हो किसी भी चीज़ का। तो हम ये कहेंगे कि ये एक ऐसी नॉलेज है जो रूल ऑफ थंब है, जो हम ये समझते हैं कि ये हमें सोल्यूशन की तरफ ले जाएगा, लेकिन हम श्योर नहीं होते। एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, learning and discovering that given a solution which is not guaranteed to be optimal। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो भी टेक्निक्स होंगे वो लर्निंग की बेस पे होंगे, वो डिस्कवरी की बेस पे होंगे, कोशिश होगी कि ये सोल्यूशन की तरफ हमें ले जाए, डिस्कवर करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑप्टिमल सोल्यूशन हो और वो हमेशा ठीक हो। तो इस वजह से ह्यूरिस्टिक है, ट्राई है किस्म की, एक गैस कर रहे हैं हम। वेयर द एग्जॉक्टिव सर्च you mean like when we are exhausted, when we are like looking for every solution, where we are going for all the possible ways to look for it. For example, there was this tree search, so if we are going for every node, then we will say that this is exhausting, it makes an exhausting search. So if it is in exhausting, so this, if it is not possible for us to use exhausting search, then we will go for heuristic search or heuristic method for solving the problem. So instead of using exhaustive way of problem solving, we go for heuristic, that maybe this is a good solution, let's try it. So if we are not going to put a lot of stress on our cognitive, which is mentioned here, we will not put a lot of load on our cognitive, like our mental capabilities, just we will look for a solution that maybe this is right, and then we will try it. So this kind of knowledge, we call it heuristic search. Example of this method include using a rule of thumb, an educated guess, and intuition, judgment, stereotyping और common sense। इसमें हम इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं कि एक एजुकेटेड गेस है, जब हम ये समझते हैं कि ये शायद कि ये बेहतर हो, हमारे पास ये बेहतर सोल्यूशन हो। एक जजमेंट है, हम देखते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है उसका ये सोल्यूशन हो सकता है, तो ट्राई कर सकते हैं। जिस तरह आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर चाबी गुम हो गई है तो क्या हो सकता है, कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, तो हम एक ह्यूरिस्टिक सर्च करते हैं। हम देखते हैं कि शायद मैंने गाड़ी में छोड़ दी हो जहाँ से मैं अभी आया हूँ, या उससे पहले अगर देखूँ तो शायद मैंने ऑफिस में छोड़ी हो, या उससे पहले अगर मैं देखूँ शायद मैंने घर में छोड़ी हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने के लिए हैं, और इसको हम कहेंगे ह्यूरिस्टिक है कि शायद ये ठीक हो उस चाबी को ढूंढने के लिए। Importance of knowledge. Intelligence required knowledge, that is, to exhibit intelligence, knowledge is required. Knowledge play a major role in building intelligent systems. So if we want to have intelligent system, knowledge based agent system, for sure we need to have knowledge. Now we have different methods how to organize knowledge, and there are 4 basic methods. One is called frame, semantic network, rules, propositional, and predicted logic, how we will use for organizing the knowledge. So we will start first from frame. Natural language understanding requires interfaces, assumptions about what is typically true of the object or situation under consideration.
So if we have natural languages, we need to have some basic objects and understanding of it. Such information can be coded in structure known as frames. اگر ہمارے پاس کوئی انفارمیشن آ رہی ہے, کوئی نالج آ رہا ہے اور وہ نارملی لینگویج کی فارم میں ہوتا ہے, ان کو ہم کیسے ریکارڈ کریں گے, ان کو ہم کیسے رکھیں گے اپنے پاس جس سے ہم بعد میں سمجھ سکیں, تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فریمز ہیں. فریمز کی فارم میں ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں. نیڈ آف فریم از اے ٹائپ آف اسکیم یوزڈ ان مینی اے آئی ایپلیکیشن انکلوڈنگ ویژن اینڈ نیچرل لینگویج پروسیسنگ. ہم فریمز کو یوز کرتے ہیں نیچرل لینگویج پروسیسنگ. یہ ایک اے آئی کی فیلڈ ہے جس میں ہم جو ہمارے جتنے بھی نیچرل لینگویجز ہیں, انگلش, اردو, ڈفرینٹ فارسی اور عربی اور جس طرح جتنے بھی لینگویجز ہیں, ان کو پروسیس کرنے کے لیے جو سسٹم بنتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے, تو اس کو ہم نیچرل لینگویج پروسیسنگ کہتے ہیں. اور کمپیوٹر ویژن کے جتنے بھی ہیں, ویژن سے ریلیٹڈ انڈرسٹینڈنگ کی, امیج کی, ویڈیو کی, تو ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے پاس اپلیکیشنز ہیں, موسٹلی میں ہم فریمز یوز کرتے ہیں, لیکن یہ مسٹ نہیں ہے, لیکن موسٹلی میں ہم یوز کر سکتے ہیں. فریم پرووائڈز اے کنوینئنٹ اسٹرکچر فار ریپرزینٹنگ آبجیکٹس دیٹ آر ٹپکلی ٹو اے اسٹیریوٹاپیکل سچویشن. جو ہمارے پاس ایک خاص قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے, ایک ڈومین سے اسپیسیفک ہوتی ہے, ایک ہی آبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, ہم فریمز بنائیں گے. The situation to represent may be visual senses, structure of complex physical objects. Frames are also useful for representing common sense knowledge. ہمارے پاس جو بھی کامن سینس نالج ہے, جو عام انفارمیشن ہے, اس کو بھی ہم سیو کر سکتے ہیں frames کی فارم میں. As frames allow need to have structure, they can be regarded as three-dimensional representation of knowledge. اب ہمارے پاس کیونکہ ہم نالج کو ڈفرینٹ اسٹرکچرز میں رکھ سکتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم اس کو کہیں گے کہ ہم اس کو تھری ڈائمینشنل ریپرزنٹیشن بھی اس کی کر سکتے ہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں اس کی ایک ایگزامپل سے. A frame is similar to a record structure and corresponding to the field and values are stored and slot filters. ہم جب بھی ہم فریمز میں کوئی ریکارڈ رکھیں گے تو اس کا اسٹرکچر سمپل سلاٹس ہوں گی اور سلاٹ کے فلٹرز ہوں گے, اس میں کون کون سی انفارمیشن ہم رکھیں گے. بیسیکلی اٹ از اے گروپ آف سلاٹ اینڈ فلٹرز دیٹ ڈیفائن کنونشنل آبجیکٹ. کوئی بھی آبجیکٹ ہمارے پاس ہوگا, اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمارے پاس سلاٹ ہوگی اور اس کے فلٹرز ہوں گے. A single frame is not much useful. Frame system usually have collection of frames connected to each other. Value of an attribute of one frame may be another frame. ہمارے پاس ایک فریم انف نہیں ہوتا, ہم بہت سارے فریمز بناتے ہیں اور پھر ان کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں, تو اس سے ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک نالج آ جاتا ہے. ویسے ایک فریم ہمارے پاس کوئی کسی کام کی نہیں ہوگی. فریم فار اے بک از گیون بلو. اگر ہم ایک ایگزامپل دیکھیں فریم کی تو کیا ہوگی, اس میں دو ہمارے پاس کالمز ہیں, جس طرح آپ کو بتایا کہ سلاٹ ہوں گے اور اس کے فلٹرز ہوں گے. سلاٹ کیا ہے, پبلشر ہے, ٹائٹل ہے, آتھر ہے, ایڈیشن ہے, ایئر ہے اور پیجز ہیں. پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فلٹرز میں کیا ہے, تھامس ہے, ایکسپرٹ سسٹم ہے, تو آتھر اس کا کون ہے, اس کا ایڈیشن کون سا تھا, کون سے ایئر میں پبلش ہوا تھا اور اس میں کتنے پیجز تھے. The above example is simple one, but most of the frames are complex. ہمارے پاس بہت سارے frames ہیں جو complex بھی ہو سکتے ہیں. Moreover, with filter slot and inheritance provided by frame, powerful knowledge representation system can be built. اب ہم بہت سارے frames کو آپس میں جب کنیکٹ کریں گے تو ہم اس کے تھرو بہت سارا knowledge gain کر سکیں گے. Frames can be represented either generic or frame. ہم frames کو represent کر سکتے ہیں ایک generic بڑے مقصد کے لیے, اور وہ specific بھی ہو سکتا ہے, صرف ایک
آبجیکٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے. فالوئنگ از دا ایگزامپل آف جنیرک فریم. اگر ہم ایک جنیرک بنانا چاہیں جو نارمل کسی بھی اس کے لیے کام کر سکے تو اس میں ہم اس طرح کریں گے کہ نیم ہم رکھیں گے سلاٹ کا, اسپیشلائزیشن آف ہوگی, کائنڈ آف مشین ہو سکتی ہے. پھر ٹائپس کیا ہیں, ڈیسک ٹاپ, لیپ ٹاپ, یہ جنیرک ہے کیونکہ ہم نے فکس نہیں کیا ہوا. اسپیڈ کیا ہے اس کی, اور لوکیشن کیا ہے اس کی, اور وارنٹی اس کی کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم بتائیں گے, لیکن ہم نے اس کو فکس نہیں کیا ہوا کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہے. ٹھیک ہے. فلٹر میں ویلیو such a computer in the name slot or range of values as in type slot. The procedure attached to the slot are called procedural attachment. جب ہم کوئی بھی فلٹرز کے اندر کوئی بھی ہم انفارمیشن رکھنا چاہیں گے تو ہم اس کو کہیں گے کہ پروسیجرل اٹیچمنٹ ہے. اب ہمارے پاس 3 بیسک قسم کے اٹیچمنٹ ہوتے ہیں. if needed ہے, default ہے, اور پھر if added ہے. As the name implies, if needed type of procedure will be executed when a filter value is needed. ہم یہاں پر یہ رکھیں گے اس وجہ سے اگر تو ضرورت ہوئی, مطلب یہ کمپلسری نہیں ہے, لیکن اگر ہمیں ضرورت ہوئی تو ہم اس کی ویلیو یہاں پر ضرور رکھیں گے جس طرح یہاں پر ہے. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے if needed کہ اسپیڈ اس کی کیا ہے, اگر ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں یہاں پر لکھ دیں گے, تو کمپلسری نہیں ہے. ٹھیک ہے. دین ڈیفالٹ کیا بتاتی ہے, ڈیفالٹ ویلیو از ٹیکن اف نو ادر ویلیو ایگزسٹ. ڈیفالٹس آر یوز ٹو ریپرزینٹ کامن سینس نالج. ہم اس میں ڈیفالٹ کوئی ویلیو دیں گے جو اگر ہم کچھ پٹ نہیں کریں گے تو وہ ڈیفالٹ ویلیو آ جائے گی. اس ایگزامپل میں اگر ہم دیکھیں تو ڈیفالٹ اس میں کیا ہے, فاسٹر ہم نے بتایا ہوا ہے کہ یہ ایز اے ڈیفالٹ ویلیو ہے. ناؤ وی موو ٹو if added is required if any value is to be added to a slot. In the above example, if a new type of computer is invented, add computer procedure should be executed to add that information. اب if added کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جب ریکوائرمنٹ ہوگی تو ہم اس میں وہ ویلیو رکھیں گے, ہمارے پاس اس کی ضرورت ہوگی. یہاں پر ایگزامپل دی گئی ہے کہ اگر کوئی نیا کمپیوٹر آتا ہے تو اس کے پورے پروسیجر کو ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کمپیوٹر میں. اینڈ if remove type is used to remove a value from the slot. اگر ہم if remove یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم سلاٹ سے ریموو کرنا چاہتے ہیں کسی بھی پروسیجر کو. تو آج کے لیکچر کو ہم کنکلوڈ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آج ہم نے کیا کور کیا. ہم نے یہ دیکھا کہ ہم فرسٹ آرڈر لاجک کو کیسے یوز کر سکتے ہیں, اس کے کیا ایگزامپلز ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ نالج انجینئرنگ کے لیے ہمیں کیا کچھ چاہیے ہوگا, کون سے پوائنٹس پہ ہم فوکس کریں گے. پھر ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ نالج کا مطلب کیا ہے, اس کی ڈیفینیشنز دیکھی, اور پھر ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ ہم نالج کو کیسے ٹرانسفر کریں گے. ڈفرینٹ میتھڈز ہیں اس کے. ہم نے یہ دیکھا کہ جو رائٹنگ میکینزم تھا وہ اس میں سب سے بہتر تھا کیونکہ وہ پرانا ہے اور ہمیں ابھی تک بہت سارا نالج مل رہا ہے پرانی بکس میں سے. ٹائپس کتنے تھے ہمارے پاس نالج کے, بیسک جو 3 بڑے ٹائپس تھے ہمارے پاس. ایک تھا پروسیجرل نالج تھا, پھر ایک ڈکلریٹو نالج تھا, اور پھر ہیورسٹک نالج تھا. تینوں میں کیا ڈفرینس تھا ہم نے وہ دیکھا. پھر ہم کیسے آرگنائز کر سکتے ہیں ڈیٹا کو, نالج کو. تو ہمارے پاس جو بیسک ڈفرینٹ میتھڈس تھے اس میں فریم تھا, سیمانٹک نیٹس تھے, رولز تھے, اور پروپوزیشنل اور اس طرح کے میتھڈس ہیں. تو ہم نے اس میں دیکھا کہ فریمز کیا ہیں, فریمز میں ہم ڈیٹا کیسے سیو کرتے ہیں, ان کو کیسے ریٹریو کرتے ہیں, ہم نالج کی بیس پہ کرتے ہیں, اور وہ نالج کیسے گین ہوگا اگر فریمز بہت ہوں اور آپس میں وہ کنیکٹڈ ہوں. اور پھر ہم فریمز میں جب اسپیسیفک ہو جاتے ہیں یا جنیرک ہوتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں, اور اس میں کس طرح
ہم انفارمیشن اور نالج سیو کر سکتے ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے اور ہم کنٹینیو کریں گے. اب تک کے لیے اللہ حافظ.